Okay, Peter. So last time we have done the cis-trans isomerism, which is called the geometrical isomerism. The key point in geometrical isomerism is that it only happens in alkenes. Okay? So the presence of carbon, double covalent bond carbon is basically compulsory for having a geometrical cis-trans isomerism. और cis का concept ये है कि the carbon which is bonded to a double bond is with a planar carbon. So if you have the carbon bonded to a double bond, उनके जो larger group हैं, if they are on the same side of the plane, then it is called the cis form, and if they are on the different side of the plane, then it is called the trans form. Okay, clear? The key point is why only alkene shows cis trans isomerism. So इसका one liner answer आपको याद होना चाहिए, which is this one, that in alkene there's a restriction in rotation along the pi bond, like a sigma bond, like a single covalent bond, which can freely rotate like a fan. इसी तरह से पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं कर सकता. ठीक है, क्यों रोटेट नहीं कर सकता? बिकॉज यू हैव अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास पाई बॉन्ड की रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, और दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट ओनली शो हाफ रोटेशन. तो लार्जर ग्रुप ऊपर चला जाता है, लार्जर ग्रुप नीचे आ जाता है, इन दैट सेट. क्लियर? And then you can easily make a cis and transform in a skeleton form. If you have a shape like a boat, then it is a cis form. If you have a chair-like shape, then it is a transform. Geometrical isomers have a similar chemical properties but different physical properties. Why the physical properties are different? A clear indication, you can see that cis form, the polar group are on the same side of the plane. So a cis form have a larger overall dipole as compared to a transform in which the polar group are on the opposite side and the polarity get cancelled out. Okay, so cis form is more polar as compared to a transform, as the polarity is different, so their physical properties are different. So if they ask you कि भाई cis or trans में से which form have a higher boiling point, so always remember कि the cis form is always more polar, thus they have a higher boiling point. as ठीक है. If you have the carbon bonded to a double bond, if it contains two similar group, either it could be two hydrogen, two CH3, two chlorine, two OH, whatever it is, then it do not show cis trans isomerism. And the last point, if you have more than one double covalent bond present, like if you have two, three double covalent bond present, then the number of cis trans isomers are 2 power n, where n is the number of carbon double covalent bond carbon. So 2 power 3, which is equals to 8. So this is all about the geometrical cis-trans isomerism. Easy sa concept. Let's move towards optical isomerism. Optical isomerism only is shown by only the organic compound that contain a chiral carbon. Okay? Only in organic compounds that contains or that have chiral carbon, CHIRAL, chiral carbon. Okay, so the key point, only in organic compound that have a chiral carbon. जिन compound में chiral carbon होता है हम उन्हें कहते हैं they are optically active and they can show a optical isomerism. Let's move towards what is the concept of a chiral carbon. A very easy concept, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, so let's talk about the chiral carbon first. Any carbon that have four different groups attached. A carbon with four different groups. ठीक है, a carbon with four different groups is called the chiral carbon. ठीक है. अच्छा, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि the carbon with a four different group, you have carbon with one hydrogen. ठीक है, let's suppose you have one CH3 here. Let's suppose you have CH3, CH2 here, and you have you can say OH here. Okay, so this is the carbon which can which have a four different group. एक तरफ CH3 है, you have one hydrogen, you have one OH, one C2H5. This carbon is basically represent or marked by a steric, and this is called a chiral carbon. इसको हम कहते हैं कि this is a chiral carbon. ठीक है, तो आसान सा कॉन्सेप्ट है. द कार्बन विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड अ chiral carbon. Okay,
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इफ यू हैव, अब इसी कायरल कार्बन में कुछ चीजें हम ऐड करते हैं बेटा. पहली बात, लेट्स सपोज यू हैव CH3, CH2, CH2, CH, Cl, CH3. You can see the first carbon bonded to three hydrogen can never be chiral, है ना, cannot be chiral. The second carbon with two hydrogen cannot be chiral. Third carbon with two hydrogen cannot be chiral. This is a carbon, which is this one. On this carbon, you have one side this whole chain attached. ठीक है, एक तरफ आपके क्या है, एक तरफ आपकी ये complete chain है. On the other side you have chlorine, एक साइड पे CH3 है और एक साइड पे आपके पास हाइड्रोजन. So if I draw this carbon in a slightly displayed form, it looks like almost like वही वाला जो मैंने ऊपर बनाया है, बिल्कुल उसी तरह का है. ठीक है, but instead of OH, you have Cl present. So it is CH3, CH2, CH2. Okay, so you can see this one is a chiral carbon. ठीक है, तो इस तरह से इसको जज करना है. याद रखिएगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे जो चेन जहां तक कंटिन्यू हो रही है, द एंटायर चेन इसी का पार्ट है. ठीक है, क्लियर. सो अ कार्बन with four different group is a chiral carbon. Now, keynote: any carbon bonded to a double bond, any carbon bonded to a double bond can never be chiral. Bonded to a double bond, यानी if there is a carbon double bond carbon, चाहे कुछ भी different लगा हुआ हो, कुछ भी हो आपके पास, it can never be chiral. ठीक है, any carbon bonded to a double bond can never be chiral. सही है, क्योंकि उसके दो साइड पे जो है वो आपके पास एक ही ग्रुप अटैच हो जाता है because of the double bond, so it cannot be chiral. Let's suppose if you have, just keep an example of this, CH3, CH, double bond, CHOH. ठीक है, अब देखो इस कार्बन के कायरल होने के चांसेस हो सकते हैं बिकॉज इट हैज वन CH3, one hydrogen, but this carbon is bonded to a double bond, so it can never be chiral. In a similar way, the second carbon, yes, it has one side hydrogen, one side OH, one side this whole group present, but it is bonded to a double bond, so it can never be chiral. सही है, so in this molecule you have no chiral carbon present. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है. अ कार्बन विथ फोर डिफरेंट ग्रुप इज अ chiral carbon, but any carbon which is bonded to a double bond can never be chiral. ठीक है जी. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल. ठीक है. नाउ बेंजीन इज कॉल्ड द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. इसी पॉइंट पे हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ते हैं फॉर एएस लेवल, अदरवाइज द डिटेल ऑफ दिस स्ट्रक्चर is a part of A2. ठीक है, so it is called aromatic hydrocarbon. The general formula of benzene is C6H6. Okay, so you can see with six carbon you just have six hydrogen, so it has multiple double covalent bond present. It has a multiple double covalent bond present. And if I draw the structure of benzene, it is a cyclic structure, CH2, CH2, CH2. Okay, and there is a alternate double bond present, 1, 2 and 3. यानी एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, फिर एक डबल, एक सिंगल. ठीक है, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. वी नॉर्मली represent this structure in a skeleton form by a hexagonal shape. So this is the structure. Clear? Can you find any carbon in the entire benzene ring which is not bonded to a double bond? सारे के सारे कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है. ठीक है, इसीलिए देयर इज नो कायरल कार्बन इन बेंजीन रिंग. नो कायरल कार्बन इन बेंजीन. अब
ठीक है, अब बेंजीन, जब भी आपको बेंजीन रिंग नजर आएगा, आप उसके सिक्स कार्बन्स को जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, और उसमें कोई चाहे कुछ भी लगा हुआ हो, बेंजीन रिंग में कोई भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता। इसी तरह से इसी बेंजीन को हम स्केलेटन फॉर्म में, ये जो ऑल्टरनेट मैंने डबल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए, इनको हम एक रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर इफ इट इज रिटन लाइक दिस, इस तरह लिखा हुआ हो या इस तरह लिखा हुआ हो, मेक श्योर यू नो दैट दिस इज अ बेंजीन रिंग एंड डू नॉट कंटेन एनी कायरल कार्बन। सही है, इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए लेट्स ड्रॉ अ बेंजीन रिंग। यहां पे लगाते हैं कार्बन, ठीक है, CH2, देन CHOH, and then CH3. Now you can clearly see how many carbon. There are lots of carbon, 6, 7, 8, 9 carbon है, but we cannot consider any carbon of a benzene ring. ये 6 के 6 carbon जो हैं वो हम count भी नहीं करेंगे, मतलब we don't even think about them for being a chiral because they are the carbon of benzene ring. Now this is the carbon which is bonded to second one, this one, sorry. This is the carbon that have two hydrogens, so it can never be chiral. This is the carbon that have one hydrogen, one OH, one CH3, and one this entire group. Key point ये है कि ये पूरा ग्रुप इसी कार्बन के साथ काउंट होगा। सही है, so yes, all four groups are different, so it has one chiral carbon which is for sure this one. ठीक है, only this one is a chiral carbon. सही है जी। तो नो कायरल कार्बन इन अ बेंजीन रिंग, बट बेंजीन रिंग के ऊपर अगर अगर कुछ लगा हुआ है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, और वहां पर आप देखेंगे कि कोई कायरल है या नहीं। एक और शॉर्ट फॉर्म, मतलब एक और शॉर्ट हैंड मेथड टू आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और ये है कि अगर स्केलेटन फॉर्म आपको गिवन है, इट कुड बी अ स्ट्रेट चेन, इट कुड बी अ साइक्लिक स्केलेटन फॉर्म, जो भी गिवन है, तो स्केलेटन फॉर्म में याद रखिएगा कि हम हमेशा सिर्फ इस इंटरसेक्शन वाले जो कार्बन्स होते हैं, यानी जो वाई बन रहा होता है जहां पर, लाइक दिस, ओके, हम सिर्फ इनको चेक करते हैं। बात समझ आ रही है? ओनली चेक दीज टाइप ऑफ कार्बन्स फॉर कायरल। ठीक है, सिर्फ इन वाई वालों को। वजह क्या है? वजह यह है कि यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड इट हैज 3 हाइड्रोजन, तो जो स्टार्टिंग वाला कार्बन है वो तो कायरल नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज 3 हाइड्रोजन। सेकंड, ये वाला जो कार्बन है, जो भी आपके पास इस तरह के कार्बन होंगे लाइक दिस, ये तो CH2 होता है हमेशा, ठीक है ना, और 2 हाइड्रोजन की वजह से ये कायरल नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम हमेशा स्केलेटन में सिर्फ ये बाय वाले इंटरसेक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर? आई होप कि यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। नाउ इफ यू हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर and let's suppose you have, it's not a benzene ring, make sure benzene ring कब होगा? जब ये अंदर ring बना होगा, otherwise it's not a benzene, that's a cyclohexane, and you have one carbon, then two carbon, and then you have three carbon। सही है? now this is the structure। अब देखिए यहां पर हम किन किन कार्बन्स को चेक करेंगे। वी चेक दिस कार्बन बिकॉज यहाँ Y बन रहा है, एंड वी चेक दिस कार्बन बिकॉज यहाँ पर Y बन रहा है। स्केलेटन में सिर्फ जहां पर वाई वाली इंटरसेक्शन आ रहा है, लाइक थ्री डिफरेंट बॉन्ड्स बने हुए, हम उन्हें चेक करेंगे ना। दिस इज द कार्बन, लेट्स सपोज दिस इज द कार्बन नंबर 1। साइक्लिक वाले को किस तरह चेक करेंगे? लेट्स हम अज्यूम कर लेंगे कार्बन नंबर 1 है, मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 3 4 5 6, यू कैन सी सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं। मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 3 4 5 6, all these carbon atoms are identical, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने में हमें इस साइक्लिक मॉलिक्यूल में सिमेट्री नजर आ रही है। ऐसे ही ना, सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से एक जैसा है, तो ये कायरल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे दिस वन
is attached to two CH3s, यहां पर भी CH3 है, you can see, एन यहां पर भी CH3 है, तो ये भी कायरल नहीं हो सकता। क्लियर, ये दोनों बातें समझ आ रही हैं? तो ये बात अच्छे तरीके से समझिएगा कि आपको रिंग वाले में ये देखना पड़ेगा कि साइक्लिक तो मॉलिक्यूल में इन मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ एनी ग्रुप इज प्रेजेंट, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी जो पोजीशन है वो दोनों डायरेक्शन से सिमेट्रिकल ना हो। इस बात को और जस्टिफाई करने के लिए let me give you one more example like this. So this is the similar molecule. थोड़ा सा मैं इसमें एक चेंज लेकर आ रहा हूँ बेटा, सही है, चेंज ही लेकर आ रहा हूँ कि आई एम जस्ट प्लेसिंग अ OH here. Okay, now I have to check this one. यहाँ पर एक Y intersection बन रहा है, मुझे इस कार्बन को चेक करना है और मुझे इस कार्बन को चेक करना है। Let's check this one first. इसको कार्बन नंबर 1 कह देते हैं। तो मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 एंड 3, OH कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 3 के ऊपर। मूविंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द OH is present at carbon number 5. So you can see the position of OH is different इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से डिफरेंट है और दूसरे डायरेक्शन से डिफरेंट पोजीशन आ रही है। इसका मतलब ये कंपाउंड, ये वाला कार्बन कायरल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कायरल कार्बन, हमने स्टैटिक से मार्क कर दिया। इन अ सिमिलर वे, अगर अब मुझे ये OH वाले कार्बन को चेक करना है, तो इफ आई कैन मेक दिस वन एज कार्बन नंबर 1, तो देखो 2 और थर्ड कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मूव करने पे 1 2 3 4, 4 पे ब्रांच लगी हुई। द पोजीशन ऑफ दिस ब्रांच व्हिच इज दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम इन मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और सिर्फ इसी रीजन की वजह से ये जो OH वाला कार्बन है, दिस कार्बन इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन। तो ये दोनों, दीज आर द टू कायरल कार्बन प्रेजेंट इन दिस वन। ये पॉइंट और जस्टिफाई होगा जब मैं आपको, sorry, like cyclic hexagonal ring, ठीक है? And if I place OH here and keeping everything same so that you can compare it, ठीक है? अब ये वाला कार्बन तो कायरल हो ही नहीं सकता, इससे सिमिलर थिंग। Now, this is carbon number 1 2 3 4. Okay, moving in a clockwise direction, the OH is carbon number 4 पे। Moving in a anti-clockwise direction, the OH is carbon number 4 पे। इसका मतलब अब ये वाला कार्बन जो है वो कायरल नहीं है। The position of OH is same while you move from moving in a clockwise direction or moving in a anti-clockwise direction. So this carbon is not chiral, and same apply for this carbon as well. तो देखो, अगर इस कार्बन के हिसाब से चेक करेंगे, हम चेक कर लेते हैं पहले। तो यू कैन सी दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, चेन किस पे आ रही है? कार्बन नंबर 4 पे। और अगर मैं यहां से यहां मूव करूंगा 1 2 3 4, you can see the position of chain. Now you can see the symmetry on both sides, the clockwise direction or anti-clockwise direction. That's why in this case this carbon is also not chiral. ठीक है, सो यही की पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला की पॉइंट क्या याद रखना है? एनी कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड कैन नेवर बी कायरल। देयर इज नो कायरल कार्बन इन बेंजीन रिंग। इन अ स्केलेटन फॉर्म हम सिर्फ इस Y वाले इंटरसेक्शन को चेक करेंगे। इन अ साइक्लिक फॉर्म वी लुक इन मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपके पास जो है वो लाइक सिमेट्री नहीं आ रही है। अगर सिमेट्री आ रही होगी तो आपका कंपाउंड जो है वो, सॉरी, कार्बन कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा। सही है, सो लेट्स चेक कि आपको बात समझ आई या नहीं। दिस वन, द क्वेश्चन नंबर 1, ओके, इट सेज दैट यू हैव असिट्रिक एसिड, यू हैव आइसोसिट्रिक एसिड। सही है, सो सबसे पहले सिट्रिक एसिड में चेक करते हैं कि हाउ मेनी कायरल कार्बन वी हैव। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन. This is the carbon of carboxylic acid, and you know that carboxylic acid में C double bond OH होता है। ठीक है, तो क्या ये कार्बन कायरल हो सकता है? It can never be chiral because it is making a double covalent bond. सही है ना? So carboxylic acid में no chiral. So इसका मतलब
In this area, you have no chiral carbon. In a similar way, this one is not chiral and this one is not chiral. This one is not chiral. So there only one carbon which can be chiral. सिर्फ इस वाले कार्बन के chiral होने के chances हैं. चेक कर लेते हैं. Now, इस कार्बन के एक साइड पे लगा है OH, ठीक है जी. एक साइड पे लगा है CO2H, ठीक है. These are the two different groups. But on the top it has CH2, CO2H. On the bottom, on the other side, you have CH2Cl. And you can see these two groups are same. और इनके सिमिलर होने की वजह से ये कार्बन भी कायरल नहीं है. So can I say that in citric acid there is no chiral carbon? In citric acid there is no chiral carbon. ये बात और क्लियर होगी when we look at this diagram, this structure. ठीक है. देखो बेटा, this is CH2C. ये तो chiral नहीं हो सकता, सही है ना. This one can never be chiral, this one can never be chiral. Done. अब जो कार्बन बचा वो ये वाला बचा. इस कार्बन को चेक करते हैं पहले. तो पीछे चेक दिस कार्बन. यू कैन सी इसके एक साइड पे लगा है ये ग्रुप व्हिच इज CH2CO2H. एक साइड पे ये ग्रुप लगा है, एंड दीस टू ग्रुप आर डिफरेंट. ऑन द वन साइड यू हैव हाइड्रोजन and on the other side you have a carboxylic acid. You can see all four groups are different. चारों के चारों ग्रुप क्या है आपके पास? डिफरेंट है. सो यस, दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन. एक तो मिल गया मुझे. अब दूसरा कार्बन which is this one, इसके भी कायरल होने के चांसेस हैं. तो यस, इट हैज हाइड्रोजन ऑन वन साइड. ठीक है जी, इट्स अ डिफरेंट ग्रुप. OH डिफरेंट ग्रुप है. कार्बोक्सिलिक एसिड एक डिफरेंट ग्रुप है. अब फोर्थ साइड पे क्या लगा हुआ है? फोर्थ साइड पे दिस एंटायर चेन इज प्रेजेंट. एंड यू कैन सी एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ CO2H, and on the other side you have the entire. So this one is chiral as well. So isocitric acid में आपको कितने chiral नजर आए? 2 chiral. So the right answer should be B. ठीक है बेटा, let's move forward and can you answer this one? देखिए, key point: carbon bonded to a double bond can never be chiral. No chiral carbon in a benzene ring. ठीक है. और बस ये दो बातें जहन में रखिए. And let's try to find out how many chiral carbon you can see in this one. तो देखें, it looks a very complicated molecule. लेकिन sort out करते हुए जाते हैं. We don't have to think about any carbon of this benzene ring, any carbon of this benzene ring. Done it? This carbon is bonded to a double bond. 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 This carbon have 3 hydrogen. This carbon have 2 hydrogen. So how many carbon left? There is only one carbon left that can be a chiral carbon. सही है ना? So देखिए, सारे वही knowledge apply करी and सब कुछ sort out होके it comes to only one carbon that can be a chiral carbon. Now let's check this carbon. So on this carbon you have one side OH present. One side you have this entire group present. One side you have a benzene ring present. And on the other side you have this whole group present. तो चारों साइड पे आपको नजर आ रहे हैं 4 different types of group. So it means that this one is a chiral carbon. And how many chiral centers are present in warfarin molecules? So the chiral carbon is 1. सही है? Clear? Now let's move forward. Um, Now this one, you can see the first carbon bonded to a double bond, not chiral. The last carbon have 2 hydrogen, not chiral. इस वाले की बात करते हैं. Which one? This one. ठीक है? Second from the top. On one side it has hydrogen. On one side it has OH. एक साइड पे लगा है ये और एक साइड पे the entire group. Okay? So yes, this one is a chiral carbon. सही है? In a similar way ये भी chiral होगा. आप चेक कर लीजिएगा, ये भी chiral होगा, ये भी. So it has 4 chiral carbon present. You can check one by one. But ये वाला chiral नहीं हो सकता because it has 2 hydrogen. This can never be chiral because it has double bond oxygen. ठीक है बेटा, so the right answer for this one is 4.
It has 4 chiral carbon present. One more last example, and then I'll give you the concept of now this one. Which compound is both chiral and acidic? Now, acidic means it must contain a carboxylic acid group. So yes, this contain a carboxylic acid group, but there is no chiral carbon because there are 2 carbon which is present in a carboxylic acid, and these are the 2 carbon that are bonded to a double bond. सही है? Now this one, yes, it has a chiral carbon. This carbon is chiral. कैसे? देखो, एक तरफ OH, एक तरफ CH3. If this is carbon number 1, carbon number 2 के ऊपर double bond आ रहा है. In moving in a clockwise direction, there's a double bond on carbon number 2. Moving in this direction, this double bond is present on a carbon number 5. So the position of the carbon number, 4. So the position of this double bond is different if you move in a clockwise and anti-clockwise direction. So this one is a chiral, but not acidic. ठीक है? Chiral है लेकिन acidic नहीं है. Now in this one, these two, yes, this one is chiral. And in this one is chiral. You can see. थोड़ी practice होगी तो आप खुद identify कर लेंगे. Now, option D is the right option because it has chiral carbon and a carboxylic acid group as well. Option C में chiral जरूर है, but this is not a carboxylic acid. This is a ester group. This is a ester group क्योंकि अगर carboxylic acid left side पे लिखा होता है तो it must be HO2CCH करके ये लिखा होता. HO2C का मतलब होता है carboxylic acid. HCO2 का मतलब है this is not carboxylic acid, this is an ester molecule. So the right answer is D. In a similar way, this one, देखिए, yes, we have to check either this one. Y वाले intersection पहले मैं mark कर रहा हूँ सारे, ठीक है? I'm marking all these intersection with Y. ये कार्बन हो सकते हैं chiral, सही? जिनमें से this one can never be chiral, bonded to a double bond. This one cannot be chiral, bonded to a double bond. So इन दो कार्बन्स को मैंने eliminate कर दिया. Now check this one. which you have CH3. तो इसके एक साइड पे CH3 है, एक साइड पे ये पूरी चेन चल रही है, इस साइड पे कुछ और जा रहा है. So you can see there's no symmetry on the other sides of this molecule. Different चीजें लगी हुई हैं, ठीक है ना? तो this is chiral. In a similar way, इसको भी आप clockwise, anti-clockwise जिस तरह भी चेक करेंगे तो symmetrical shape नजर नहीं आ रही. Chiral है. This one is also chiral. This one is also chiral. इसको चेक कर लेते हैं. कार्बन नंबर 1 और यहां से जाएंगे तो 2 के ऊपर आपके पास कुछ और लगा हुआ है और यहाँ 2 के ऊपर you have nothing present. So this is chiral as well. Clear? In a similar way, this one is chiral as well, which is this one and this one. So it has 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has 6 chiral carbon present, which is this one. ठीक है बेटा? So that's how you have to check these type of molecule. Let's move forward. अब इसके एक का सिंपल सा क्वेश्चन और होगा, लेकिन स्केलेटन में it should be clear कि आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकें. Which molecule does not have a chiral carbon? So this one is a chiral carbon. अब तो देखते ही पता चल रहा है. This one is a chiral carbon. C और D में से डिसाइड करके बताइए. देखिए, C में इसमें एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 है. इसमें भी एक तरफ OH और एक तरफ two different groups. But you can see D में these two groups are exactly identical. जबकि C में क्या, यहाँ पर OH की पोजीशन कार्बन नंबर 1, 2, 3 के ऊपर है और इसमें OH की पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, कार्बन नंबर 4 के ऊपर. So they consider to be a two different groups और ये कार्बन भी chiral कहलाएगा. So the right answer is basically D, which do not have any chiral carbon. D में कोई भी कार्बन chiral नहीं है. सही है? So that's it about the chiral carbon, and let's move towards the concept of optical isomerism. Optical isomerism देखें. अब optical isomerism का concept बहुत clear सा है. Optical isomers are the mirror image of each other. Optical isomers
are the mirror image of each other. ठीक है बेटा, let's suppose take an example of a chiral carbon CH3 CH OH और आगे लगा देते हैं CH2 CH3. You can see this one is a chiral carbon. But if you have to draw the mirror images of this, so आपका chiral carbon कौन सा है? This is the chiral carbon. You draw this chiral carbon in a displayed form, and you can see it making 4 sigma bonds. So the shape should be a tetrahedral shape. आपने क्या किया? आपने एक tetrahedral shape draw कर दी. ठीक है? अभी जो 4 different group लगे हुए हैं, जो group जहां दिल चाहे आप place कर दीजिए. Let's suppose I am placing OH here. I am placing hydrogen here, CH3 here, and CH3, CH2 here. ठीक है? And then I'm drawing a mirror because as they are the mirror image, and इसी shape का mirror image मैंने यहाँ पर draw कर दिया. Hydrogen. ठीक है? This is the wedge one. And this is the dash line. सही है? So OH यहाँ आ जाएगा. Dash line पे CH3 लगा हुआ था, and this one is CH2 CH3. You can see these are the mirror image of each other, and we mark the chiral carbon by steric. So whenever you have to draw the optical isomers, you just simply draw the tetrahedral displayed form, और फिर उस tetrahedral displayed form का mirror image आप draw कर देंगे. सही है? Clear? So that's how you have to draw it. अच्छा, यहाँ पर बस एक last एक दो key point रह गए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. And then why they are called optical isomers? Any organic compound with chiral carbon carbon is called optically active. It's called optically active. ठीक है? ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल एक्टिविटी पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है. देखिए, द नॉर्मल लाइट जो हमारे पास सोर्स से आती है, और सनलाइट और एनी यूवी लाइट, इट हैज टू फील्ड्स. एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, ठीक है, एंड इज वन मैग्नेटिक फील्ड. सो एंड देयर इज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन दैम. ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है? जो उसको हम नॉर्मल, नॉन पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं. दैट्स आवर नॉर्मल लाइट. व्हेन वी पास दिस लाइट थ्रू अ पोलराइजर. सही है? पोलराइजर, इट कुड बी एनी प्रिज्म और एनीथिंग. आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर. ठीक है? एक पोलराइजर से पास करने के बाद फर्क क्या आता है बेटा? इसमें फर्क ये आता है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेम प्लेन आ जाती हैं. ठीक है? This is your electrical field, and this is your magnetic field. Clear? पोलराइजर से पास होने के बाद क्या होता है कि दोनों are on the same plane. इनके दरमियान कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं होता. This type of light is called plane polarized
लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट। अब क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? द एनी कार्बन, sorry, any organic molecule which contain the chiral carbon can rotate a plane polarized light either in a clockwise direction or either in a anti-clockwise direction। यानी जब ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड वाली प्लेन पोलराइज लाइट किसी भी ऐसे सॉल्यूशन से गुजरेगी जिसमें आपके पास कायरल कार्बन हो, तो उनके मिरर इमेज भी होंगे। तो क्या होगा, एक मिरर इमेज इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, तो दूसरा मिरर इमेज क्या कर रहा होगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यू टू अ chiral carbon और मिरर इमेज इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम यहां लिख लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, द रोटेशन of plane polarized light in clockwise or anti-clockwise direction is called optical activity। ठीक है बेटा, so the rotation of plane polarized light either in a clockwise direction or in an anti-clockwise direction is called optical activity। Clear? And optical isomers can rotate it and so अब ये optical activity का concept और optically active होने का मतलब समझ में आ गया। यानी any molecule that have a chiral carbon present is called optically active because it can rotate a plane polarized light either in a clockwise direction or in a एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी रोटेशन से हमें पता चलता है कि आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इसमें कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है। बट वन मोर लास्ट थिंग एंड देन वी डन विद दिस वन, एंड द लास्ट थिंग इज दैट ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव similar chemical and physical properties। Optical isomers have similar chemical and physical properties। इनके कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं, जैसे इफ इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली वी जनरली यूज द टर्म दैट दे हैव द सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल properties। At this stage, we done with the isomerism. So you remember we started the isomerism from here। द बेसिक डेफिनेशन चेन आइसोमेरिज्म आसान सा है, ओ लेवल्स वाला चेन एंड पोजीशन है। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म ऑनवर्ड हमारा ए लेवल से स्टार्ट हुआ। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हैव द सेम जनरल फार्मूला, that's why they have the function group isomer of each other, carboxylic acid and ester, aldehyde and a ketone। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी। प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म के अलावा सब में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। But in a function group, isomers have a different physical and a chemical property। A straight chain molecule have a higher boiling point as compared to a branch one। Stereoisomerism में the organic compound having the same molecular formula but different arrangement of atoms। जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी ज्योमेट्रिकल सिस्टर्स ओनली इन एल्कीन्स, आज ही हमने रिवाइज किया दोबारा, because of restriction in rotation, and then skeleton form, and then all these this optical isomers are the concept of a chiral carbon, a carbon which have four different groups attached। उसमें हमने कुछ की नोट्स ऐड किए कि any carbon bonded to a double bond can never be chiral। benzene ring में there is no chiral carbon, and in a cyclic structure or in a skeleton form you have to check Y वाला इंटरफेस, और फिर उसमें भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सिमेट्री ना हो। ठीक है, optical isomers are the mirror images of each other, and any compound with a chiral carbon
इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। और फिर हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझा कि क्या होता है, और उसके बाद हमने कहा कि दे हैव द सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बात याद रखिएगा कि 2 पावर n विच इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ भी वैलिड है। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकल में पूछा है तो n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पूछा है तो n का मतलब है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अगर आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है इन विच यू हैव मोर देन वन कायरल कार्बन प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स आप उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो हम पढ़ते हैं, विच इज द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला 2 पावर n। ठीक है, so we done with the isomerism part. The next part is going to be inshallah for the reactions, mechanisms or types of organic reactions and the reaction mechanism next session में करेंगे।